थोड़ा अभी भी देख लीजिएगा. Is my voice clear after this sharing of screen? The chapter's name is electrochemistry. ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. Is my voice clear? सही है सब कुछ? Yes, sir. So first of all, we are going to see what are the different topics in electrochemistry. It is one of the most very important chapters if I think in terms of the marks. Like from electrochemistry, you will be having at least 7 to 8 marks of questions in the board examination. So that itself tells you the importance of this particular chapter. There are total 10 chapters, है ना? And there are total 10 chapters. और यहाँ पे electrochemistry से ही आपके पास 10 marks का difference ले आया था. At least is 7. Now, electrochemistry, you can divide electrochemistry in 3 different topics. The first topic is electrochemical cell, or rather, I would write it galvanic cell. The second topic is electrolytic cell. And the third topic is conductance. Third topic is conductance. Now, a very good part about this particular chapter is that these topics are not interrelated. For example, it is somewhat interrelated. Obviously, you have to understand what I'm saying when I say cell, and when I say electrode potential. So there are some certain terms that you need to understand, but galvanic cell and electrolytic cell, they are not, they're almost independent. Obviously, there are some wires which you can join from galvanic to electrolytic, but if you want to do questions of electrolytic cell, that does not require an in-depth knowledge of galvanic cell. Similar is the case of conductance also. In order to answer questions of conductance, you don't need in-depth knowledge of electrolytic cell or galvanic cell, right? So this is one of very good chapters that does not have interdependencies. Now, what is this chapter? What we are going to learn about this chapter? What are we going to learn in this chapter? Don't need to write these things, whatever I'm telling right now. आपको जब हम बताएंगे यहाँ से आपको लिखना है तो वहां से आप लिखना फिर शुरू कर दीजिएगा. ठीक है? Whenever we talk about science, we have to basically talk about matter and we have to talk about energy. Matter and just give me a second. Just give me a second, guys. Whenever we talk about science, we have to talk about matter and energy. And what we learn in matter is what we have learned in the second chapter, solution, the composition of a matter, like whether the matter is having solute, solvent, and the conditions. Now, when we talk about energy, there are two things that we talk about in terms of this chapter. Basically, is dealing with energy part. Now, in energy, there are two things that we have to study. You have to study that. I will let you know when you have time. Okay, don't write. Okay. When we talk about energy, we have to talk about the transfer of energy from one system to another. Okay, you have to study about
transfer of energy from one system to another, and this is studied in the topic of 11th standard, that is thermodynamics. Another thing that you can study, for example, transfer like if there is a body at rest, you apply some force onto it, then you are transferring energy from your body to that particular object, and that object starts moving. So आपने जो energy डाली है, mechanical energy, that is, you have transferred your energy to that particular body. Another thing that we learn in terms of energy is transformation. Also, transfer of energy can be done by heating something, right? Another thing that we can do is transformation. Transformation of energy. Transformation of energy is going to be studied in this particular topic, in this particular chapter, that is electrochemistry. Yes. Now, in electrochemistry, we are going to learn about transformation. That's it. Right now, when I'm speaking, I have sound energy. That sound energy is captured by the mic. The mic transforms this sound energy to some electrical signals, and it is traveling through a wire, and then it is going to the laptop, and laptop is connected to a network with by the help of electromagnetic radiations. Now, electromagnetic rays may convert to, and then it reaches you. Then your laptop again converts that electromagnetic signals to some electric signals. फिर आपके इलेक्ट्रिक आपके मतलब कंप्यूटर में जो वायर लगा होगा माइक का उसमें फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाती है देन अगेन इट रीचेस योर ईयरबड्स में वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें it gets transformed from electrical signals to again a sound energy. So all of these are what transformations of energy. But in electrochemistry, what we need to study is the transformation of electrical energy to chemical energy, and also transformation of chemical energy to electrical energy. Is this clear? Yes or no, please tell me. क्या ये बात आपको समझ में आई? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So अब हम लोग थोड़ा सा slowly we are going to start to learn about how to convert the chemical energy to electrical energy. This will be studied in the galvanic cell. And how to convert electrical energy into chemical energy. This will be studied in electronics. So whenever we say electrolytic cell, whenever we say chemical energy, it means you're talking about a chemical reaction. Because each and every chemical reaction will proceed with a particular energy. Whether it will be exothermic, it will give out energy, or it will be endothermic, it will take in energy. So always there is a transaction of energy taking place whenever there is a reaction taking place. So that transaction of energy is what we call as chemical energy. ठीक है, that's what we call as chemical energy. अब यहाँ बिल्कुल बेसिक्स पे आपको बताते हैं, don't no need to write, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है, आराम से चिल होकर सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा चैप्टर में समझ में आएगा. ठीक है, इट्स वन ऑफ दोस चैप्टर जहाँ पे बच्चे फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूले रखते हैं, ठीक है, तो आपको वैसे नहीं, स्टार्टिंग से बिल्कुल. अब समझते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट द एनर्जी दैट वी गेट from a chemical reaction to electrical energy. I'm starting from a very theoretical portion. In the sense कि अभी हम सिर्फ ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं. एक thought है हमारे पास कि we know that certain reactions are spontaneous, and whenever you have spontaneous reaction, energy is released. Can we capture that energy? Can we capture that energy? So whenever anything happens spontaneously, for example, in dams, water fall down automatically. There is no human intervention. Whenever I say spontaneous, आप समझिएगा बिना इंसान की मदद से काम हो रहा. Without any human intervention, the work is happening. So whenever water is at high heights, so it गिरता है नीचे. And when it falls down, it is falling down without any human intervention. And then you add a turbine there, because the water is falling down automatically. The turbine will move. Then you convert that mechanical energy to electrical energy. Right? Let me take one. So whenever there is a spontaneous thing happening, whenever there is a release of energy, we can capture that energy in form of electricity and we can store it. Now, can we do that for chemical reaction? That was the question. So बहुत basic चीज आपको बता रहे हैं. We know that
sodium has tendency to lose electron and chlorine has tendency to gain electron. तो सोडियम और क्लोरीन का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड देन वी गेट व्हाट देन वी गेट सोडियम क्लोराइड. बट वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम. सोडियम ऐसे नहीं सोडियम कहीं खाली बैठा है तो सोडियम मतलब पॉइंट पर है ऐसा नहीं. Sodium has tendency to lose electron when there is someone who has to gain electron. And also chlorine ऐसा नहीं कि सबसे भीख मांग रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो हमको इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं. What's happening? Chlorine has tendency to take electron when someone is giving electron. So when sodium and chlorine are connected or when they are closer, sodium has tendency to lose electron, chlorine has tendency to gain electron. So that transaction takes place. That's it. Now we are just हवाई बातें कर रहे हैं. अभी हम मान लेते हैं, let us suppose I have sodium in this particular container and I have chlorine in this particular container. A sodium and we have attached this through a wire. And wire के साथ साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? Let us suppose we have added a bulb. A sodium has tendency to lose electron, chlorine has tendency to gain electron, and there is a metallic wire. So obviously we can say that एक हवाई बातें कर रहे हैं. We are not talking about the logistics. How will you store sodium? How will you store chlorine? हवाई बातें. Sodium देगा और chlorine लेगा. Transfer of electron will take place in this manner. And in this way, if the electron is moving, उसके opposite way में current दौड़ेगा, and when the current is going to run through the wire, obviously this light will or this bulb will start to shine. this. अब यहाँ पे देखते हैं सोडियम की टेंडेंसी क्या है टू लूज इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है टू गेन इलेक्ट्रॉन. That means in one container I need something that has tendency to lose electron. सोडियम और क्लोरीन लेने की जरूरत नहीं है ना. I can take anything which has tendency to lose electron, and in the other compartment I will take anything which has a tendency to gain electron. I will connect both of these two compartments with the wire, and then the electricity will flow. Does that make sense till here? Yes or no? Please tell me. Amna, Maria, Sufyan. We need something that has tendency to, है ना? And something that has tendency to gain electron. दोनों को वायर से जोड़ दी, then obviously electron will flow. When the electron flows, you can get lighting in the bulb. अब यहाँ पे आप चार्ज भी कर लीजिए बैटरी. That's another thing. But electricity चाहिए हमको basically. That electricity we are getting. हाँ. Someone was asking something. Tell me guys. Was that? मरी मतलब आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, समझ में आ गया. आगे समझ में ठीक सही है. तो अब यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द लॉजिस्टिक्स. अब वो लॉजिस्टिक्स पर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग. बट आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा व्हेन यू डिप जिंक इन ZnSO4 और कॉपर इन कॉपर सल्फेट. ऐसा कुछ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा वहां पे. नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए. अभी आपको बता देते हैं. नाउ देयर इज सम जैसे 8th क्लास के बच्चे को पता नहीं ना सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक टू डिफरेंट मेटल्स which एक उसमें से एक मेटल होगा that has tendency to lose electron. There will be another metal that has tendency to gain electron. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो we have taken two compartments. इतना कम से कम पता चल गया होगा. In one compartment we will take something that has tendency to lose electron. दूसरे compartment में we are going to take something that has tendency to gain electron. तो यहाँ पे आपके पास we have zinc metal. This is a zinc rod. And यहाँ पे हम लेंगे एक copper rod. ठीक है. And here you will have ZnSO4 zinc sulfate in this Zn sulfate ion का कोई यहाँ पे के लिए भी लेते हैं आप.
SO4 2 negative, right? Because this solution is made up of ZnSO4. और इस यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में we are taking copper sulfate CuSO4. Here you will be having copper 2 plus क्या है, और यहाँ पे आपके पास होगा SO4 2 negative. ठीक है, SO4 2 negative. जिंक है, मैं बता रहे एक चीज आपको, उस चीज को मान लीजिए आप, है ना? ठीक है, जैसे सोडियम के पास आपको पता नहीं ना, सोडियम के पास क्यों होता है टेंडेंसी, क्यों नो, थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा सा ध्यान दें कि सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वैसे जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और कॉपर प्लस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. ठीक है, इन वन का पार्टनर देयर इज समथिंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, देयर इज अनदर टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा, जिंक भाई साहब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड दे विल जिंक रॉड, the zinc metal है that will transform to Zn2 plus. So when it is losing 2 electron, दो इलेक्ट्रॉन रॉड में रहेंगे, फिर वायर मिलेगा तो वायर में से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, they will travel and it will reach the copper compartment. अब कॉपर कंपार्टमेंट को सबसे पहले क्या मिलेगा, it will get copper. इलेक्ट्रॉन को कौन मिलेगा, सबसे पहले कॉपर मिलेगा. ठीक है, तो कॉपर बोलता है हम खा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेगा शर्मपुर have some shame, copper you are a metal, you have tendency to lose electron. अब हमको खा कैसे सकते हैं, कॉपर बोलेगा हाँ तो ये I am a metal, बोलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ा, इसको मिला SO4 2 नेगेटिव. ना SO4 2 नेगेटिव बोलता हम खा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेगा दूर भागो, तुम भी नेगेटिव हम भी नेगेटिव, वी आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, हाउ कैन यू इवन कम क्लोजर टू मी, हाउ कैन यू गेन द इलेक्ट्रॉन, यू आर नेगेटिव आई एम आल्सो नेगेटिव, राइट? तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी गेन बाय SO4 2 नेगेटिव. तीसरा जो यहाँ पे कमोडिटी, तीसरा स्पीशीज जो है दैट इज कॉपर टू पॉजिटिव. कॉपर टू पॉजिटिव बोलेगा आई आई हैव पॉजिटिव चार्ज, यू आर नेगेटिव चार्ज, लेट अस न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं. ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खा ले, कॉपर 2 प्लस विल ईट द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जिंक इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव इज ईटिंग द इलेक्ट्रॉन. डज दिस मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी टिल हियर. और जैसे ही ये दौड़ेंगे तो फिर बत्ती जलेगी. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर. हाँ जी बताएं. ठीक, कुछ सुनते हैं और जरा कहानी आगे और लाइक ऐसा हुआ, साइंटिस्ट ने सब बोल रहे हैं ऑल ऑफ दीस थिंग्स वर मेड एंड बत्ती जली, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर अ फ्यू, कुछ आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, व्हाट हैपेंड, बत्ती बुझ गई. बल्ब वाज नॉट ग्लोइंग एनीमोर, द बल्ब वाज नॉट ग्लोइंग एनीमोर. अब क्या करें, सोचना पड़ेगा ना, व्हाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. ध्यान से अगर हम सोचें यहाँ पे, जिंक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वैसे वैसे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाएगी, बिकॉज जिंक क्या कर रहा है, जिंक व्हेन इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव, और तब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस कंपार्टमेंट, कॉपर 2 पॉजिटिव, इट इज eating the electron, it is eating the 2 electron and getting converted to copper. इसका मतलब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है. यहाँ तक भी क्लियर है सबको? ये सोनो टीचर, नहीं आमना मरियम सुफियान, ये सुनो. सर कैन यू सी वन सी? हाँ, what is happening in the zinc compartment, मरियम बतूल? Zinc is getting converted to, बोलिए तो, हम नहीं बोलेंगे ना तो हमने तो बोल दिया, हम वही दोबारा रिपीट करेंगे. आई वांट यू टू एंगेज इन द क्लास, दैट्स इट. जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zinc ion. प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, बोलिए. जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू, 2 पॉजिटिव. तो जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. देयर विल बी मोर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, मेक सेंस? यस. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर टू कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में इसमें रेड्यूस हो रहा है. कॉपर. हाँ, तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव तो बच नहीं रहा, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर आयन, कॉपर मेटल. तो कॉपर 2 पॉजिटिव तो डिक्रीज करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन में. बात समझ आ रही है? यस. ठीक है, वही हो रहा है. ओके Now, सर. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. हम ऐसे कह सकते हैं, इन द जिंक कंपार्टमेंट positive charge is increasing. The concentration of zinc 2 positive is increasing. The concentration of 2 positive is increasing.
meaning the concentration of positive charge is increasing. That will make the container positively charged. That will make this part of container positively charged. अब अगर हम यहाँ पे देखिए copper 2 positive concentration बढ़ रही है, that means there will be more of SO4 2 negative ions. Starting में तो दोनों same होंगे. If you take one copper sulfate, you will get one copper 2 positive, one SO4 2 negative. Let's take one mole, एक mole copper 2 positive, एक mole SO4 2 negative. But with time, copper 2 positive is getting converted to copper metal. Concentration of copper 2 positive is decreasing, but the concentration of SO4 2 negative is still one mole. That means the negative charge is increasing in this copper compartment. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yeah. ठीक है. Yes, अभी बहुत sir. इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, अभी बोल रही है. अब सुनिए, if the zinc compartment, if the zinc compartment is having positive charge, तो electron बेवकूफ है क्या? वो negative charge के पास जाएगा. After some time, अगर positive charge zinc compartment में बढ़ जाएगा, तो electron बोलेगा हम वहां क्यों जा रहे हैं? वहां तो negative charge that will repel me. The copper compartment is becoming more and more negative. So the electron will be repelled by the copper compartment. Now zinc जो है zinc compartment is getting more and more positively charged. Electron बोलेगा भाई इधर ही आ जाओ. Let us neutralize the zinc 2 positive. वो बहुत ज्यादा positive हो चुका है, तो zinc compartment will not let the electrons move towards the copper compartment, and that's the reason bulb will stop glowing. Electron move ही नहीं करेगा तो bulb glow कैसे करेगा? Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. जी बताएं. Yes, sir. सही है. अब यहाँ पे इसका इलाज करना पड़ेगा, तो इसके इलाज के लिए अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों ने देखा होगा एक चीज होती है, इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज. इसी का इलाज है सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज ना. दिस इज सॉल्ट ब्रिज. What we do in this salt bridge, we keep some salt. क्या बोलते हैं इसको? Salt bridge. So we know that in salt bridge we have a cation and we have an anion. Cation or anion. So what we are going to take as salt, हम लोग लेते हैं KCl. KCl में आपके पास होगा K positive and Cl negative. Now, as soon as the positive charge will increase in the zinc compartment, the chlorine will move down here and neutralize the extra positive charge. As soon as the negative charge will increase in the copper compartment, the K positive will move down here and it will neutralize the negative charge. Now, when the positive charge is neutralized, the negative charge is neutralized, the electron flow will start once again. And then the bulb will start again. Now, this complete setup, it is known as a dynamic cell, because specifically this particular cell in which we are taking zinc and copper as the electrodes, we call
We call this galvanic cell. ठीक है, इसको अभी आपके बात करने की जरूरत कुछ नहीं है, हमने तो सबको समझा दिया। ठीक है, अब आपको लिखना चालू, ठीक है ना, यू विल स्टार्ट राइटिंग और आप लिखते रहेंगे, आपको समझ में चीजें आते रहेंगी, नहीं? Yes. हेडिंग डालिए गैल्वेनिक सेल। You also call this electrochemical cell. क्या होता है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? राइट, the cell in which spontaneous redox reaction, spontaneous redox gain of electron, loss of electron क्या है? redox reaction है, redox reaction occurs due to which chemical energy is converted to electrical energy. ठीक है, is converted to electrical energy. In a galvanic cell there are two compartments, एक जहाँ ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा जहाँ रिडक्शन होता है. So one is known as the anodic compartment. The important point regarding anodic compartment that oxidation occurs here. Anode में क्या होता है? ऑक्सीडेशन. Oxidation occurs here and इसकी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी इज नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीडेशन में क्या होगा? यू विल लूज इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करें तो वो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. Hope you guys are writing with me. Another is cathodic compartment. And what happens here? Reduction occurs here. Another thing is that polarity is positive. Now, अब हम लोग लिखेंगे about the Daniel cell, the zinc, copper zinc cell. Daniel cell, copper zinc cell. Now there are two compartments, that is zinc compartment and copper compartment. So first of all, we will write about the zinc compartment. At zinc compartment, zinc वाले compartment में क्या हो रहा है? First thing that is happening here is Zn is getting converted to Zn2 positive and is giving 2 electrons. That is oxidation is occurring here. यहाँ हो रहा है oxidation, and because it is oxidation is occurring here, we will call this anode. Next point, the polarity will obviously be negative because it is an anode. Now zinc is getting converted to Zn2 positive to zinc rod. That zinc rod will have zinc and it is getting converted. Zinc rods से zinc निकल रहा है. So mass of zinc rod decreases. Another thing that happens is the concentration of Zn2 positive increases. ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे. Another is the copper compartment. So next taking it at copper compartment.
Now, in copper compartment, what are the things happening? First of all, the reaction. Copper 2 positive is keeping 2 electrons, getting neutralized to make copper. Another is the reduction is occurring here. And because reduction is happening, we will call this cathode. Another point is polarity. If I talk about the polarity is positive. Another point is mass of copper rod is increasing because copper 2 positive from the solution, it's getting converted to copper solid. तो वो डिपॉजिट होता जाएगा कहाँ पे रॉड में डिपॉजिट होता जाएगा एंड जब रॉड में डिपॉजिट होता जाएगा then obviously the mass of copper rod will increase. Another thing is the concentration of copper 2 plus ion, it will decrease. अब तीसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे लिखी है what is happening in the overall cell. ओवरऑल सेल में क्या हो रहा है? Electron is moving from zinc compartment that is anode to copper compartment that is cathode. ठीक है? Overall cell में there can be overall cell reaction. Anode में क्या reaction हो रही है? Zn is getting converted to Zn2 positive. It is giving 2 electron, and in cathode, copper 2 positive is getting 2 electron, getting converted to copper. Now, if I talk about the overall cell, in the overall cell, zinc है, copper है. Here in the right side, we will be having 2 electrons, the left side 2 electrons. So these 2 electrons can get cancelled. और आपको मिलेगा zinc plus copper 2 positive, giving you Zn2 positive plus copper. ठीक है, so this we call that as the cell reaction. Raise your hand once you're done. Please raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Maria Kapoor. Maria Kapoor, just waiting for you. Maria, I saw you turning the mic on, कुछ लेकिन आवाज नहीं आई आपकी. मरियम, are you done? Please let me know. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Yes, मरियम. मास्टर पेन ओपन करना है. ठीक है. Please hand मरियम. बताइए.
माइक खराब हो गया तो आप करते नहीं लिख के जाएगा राइट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है सॉल्ट ब्रिज आई एम राइटिंग द डेफिनेशन एंड एवरीथिंग आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो है ना थोड़ा देखते रहिएगा इट इज an inverted U-shaped tube containing inert electrolyte with agar agar with agar agar or gelatin in semi-solid form in semi-solid form ठीक है and what are the salts that we keep here for example we keep here KCl we keep here KNO2 we keep here NH4NO3 what are the functions of salt bridge write this things with me yeah? Functions of salt bridge फंक्शन में इसके पास सबसे पहला है it connects the solution of two half cells to complete the circuit अगला है it maintains the electrical neutrality of solution ठीक electrical neutrality of solution that means जो जिंक पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो कॉपर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है another is it minimizes the liquid junction potential the liquid junction potential raise your hand once you're done देखिए एक तो आपके पास सर्किट जा रहा है ना एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर थ्रू द वायर दैट सर्किट शुड बी कंप्लीट वो सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है देन वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम उससे फिर पूरा कर देखें सर्किट कंप्लीट हो गया है सर्किट इनकम्प्लीट नहीं and then it maintains the electrical neutrality of the solution liquid junction potential को आप छोड़ दीजिए इसको ऐसे याद कर लीजिएगा ठीक है ना liquid junction potential मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको दो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन बोला जाएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपके सिलेबस में से है नहीं बट जस्ट टू छोटा पॉइंट है इससे याद रहता है बच्चों एंड यू कैन राइट इट एंड यू विल गेट मार्क्स आल्सो ठीक है तो इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो थोड़ा अगर हम बताना चाहें आपको तो जिंक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव 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 चार्ज आ गया है और यहाँ पे कॉपर वाले में नेगेटिव 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 चार्ज है तो व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल तो पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड because of the salt bridge this positive and this negative charges do not occur it neutralizes this positive and the negative in the zinc and copper respectively that is why this electrical field is not present and when we have salt bridge उसी का ये यही पोटेंशियल जो होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसी को बोलते हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता है। एवरीवन राइटिंग टिल हियर? यस, मरियम बतूल वेटिंग फॉर यू। मरियम बतूल, क्या हमारी पे काम नहीं करना बंद कर दिया क्या कैसे आपका? जी मरियम, आवाज आ रही है मरियम? मरियम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक। चलिए, अब मेन, अब फिर से यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और इसके बाद हम लोग सवाल वगैरह करेंगे, ठीक है। आज सुनिएगा, दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एटलीस्ट इन द पार्ट वी आर स्टडीइंग गैल्वेनिक सेल, जब तक आप गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तब तक आपको ये पार्ट जरूर आना चाहिए। दिस शुड बी इन योर फिंगर टिप्स, बहुत आसानी से आना चाहिए आप, ठीक है। आपके पास द टॉपिक इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में अब आपको ये डायग्राम दो। आराम से सेल को बनाइए। Raise your hand once you're done writing. Waiting for Amna and Sudhyan.
और मैं सुफियान थोड़ा जल्दी हाथ चला लें आप लोग प्लीज। मेहंदी नहीं लगानी, हाँ ठीक है सुफियान तो हो गया। मैं वेटिंग फॉर यू। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब भी whenever you want to talk about a particular cell, हम ऐसा पूरा का पूरा सेल तो बनाने नहीं जाएंगे, है ना। ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू शॉर्ट दिस। तो देखिए इसको शॉर्टकट में क्या लिखने का, उसी को हम लोग को पढ़ना है सेल रिप्रेजेंटेशन में। बेसिकली यू नीड टू जस्ट रिमेंबर। अच्छा सबसे पहले चीज क्या पढ़ी थी आपने आमना? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग? नॉट 11th 12th, बचपन में सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? आमना टेल मी। आमना सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? आमना का माइक की बंद। सुफियान बताएंगे। हाँ आमना बताइए बताइए बताइए, आमना बताइए बताइए। Yes, sir. ये आमना टेल मी। क्या पूछा? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था बचपन में? What did you learn? What was the first thing that you learned? नहीं पता, इसको बोलिए। हाँ बताइए। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी आपने? जवाब ऐसे थे ना, तो सुफियान बताएंगे। सुफियान In व्हाट school, वाज द yeah. फर्स्ट थिंग? मरीमतुल आप चार्ट में बताइए। हाँ स्कूल में सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था? Uh, Manual things and readings. हाँ, पहले आपने पढ़ी थी ना बच्चों को, ए बी सी, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस नाउ, आवाज ठीक है? अभी भाई कैसे ठीक? Still not clear. ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है ऑनलाइन।
ये पता है ऑलमोस्ट आ रही है Yes, sir. ऑनलाइन से क्या हमें अवेलेबल Yes. प्लीज ध्यान से देखिएगा in anode zinc is getting converted to Zn bridge in cathode copper to positive to copper. Okay, so something in the examples questions वगैरह में. And the way that we can see is like this. Zinc solid is getting converted to Zn positive, which is an aqueous solution. Bridge copper to positive, which is in aqueous solution, is getting converted to copper. Can you see the screen? No. अभी मैं देखिए Yeah, is this visible now?
Tell me guys, am I audible? Is the screen visible? Yeah. Yes, sir. Okay. So first, that is the basic thing that they will tell you about the cell. That's the one of the most basic. Another thing that can add information, for example, zinc solid state, 2 positive, aqueous copper, 2 plus, aqueous copper is a solid state. Another way of writing this would be zinc, which is in solid state, and this is just a slash zinc 2 positive. It has a concentration of 0.1. And similarly, copper 2 positive has a concentration of this 0.4 molar. And you have bracket copper solid. Okay, so in the example, we have more information, that is the concentration of Zn2 positive and the concentration of copper 2 positive. Okay, in दोनों information here we have added more information. Please copy this down, raise your hand once you're done. So हम internet का put. Raise your hand once you're done. Just waiting for Sufyan. Sufyan, raise your hand, Sufyan, once you're done. Am I audible? Complete नहीं हुआ अभी तक सत्यान? Okay, चलिए बढ़िया. Now, let us write a question. Represent the following cell and determine number of electrons used in the cell reaction. रिप्रेजेंटेशन तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम gives magnesium 2 positive plus copper. Plus copper. ठीक है, so this is the reaction. So we can easily first of all identify where the oxidation is taking place in the reduction. तो कॉपर का आप देखिए तो कॉपर इज गोइंग फ्रॉम कॉपर टू पॉजिटिव. यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज रिडक्शन. एंड इफ इट इज रिडक्शन तो ये कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा. Mg is getting converted to Mg2 positive. So this is what? This is oxidation. Oxidation है तो कहाँ जाएगा? एनोड में जाएगा. ठीक है, तो you can write the cell, you can write the represent the cell very easily. Oxidation क्या होता है? A, B and C. एनोड, ब्रिज, कैथोड. एनोड में क्या हो रहा है? Mg से Mg2 पॉजिटिव. Mg लिखा आपने पहले, स्लैश दिया, Mg2 पॉजिटिव लिखा आपने. ठीक है, उसके बाद ब्रिज है आपके पास,
ठीक ना। कैथोड में क्या है सबसे पहले कॉपर 2+, तो कॉपर 2 आपने लिखा द रिएक्टेंट साइड कॉपर 2+ getting converted to what, getting converted to copper. Now you need to understand, now you need to find out the number of electrons. Number of electrons के लिए देखिए, किसी एक आयन को चूज कर लीजिए, कॉपर को चूज कीजिए या फिर मैग्नीशियम, किसी को भी चूज कर लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू n into change in oxidation state। ठीक है, बताते हैं n क्या है सब कुछ। n है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आपको याद हो, 1 copper 2 positive reacts with 1 magnesium to give you 1 magnesium 2 positive and 1 copper. This is what this is the stoichiometric coefficient. So n कितना हो जाएगा, whether you take copper or Mg, n is in both the case going to be 1 into delta OS. What is delta OS? Change in oxidation state. ठीक है, delta OS क्या है? Change in oxidation state. If I look at copper, so copper यहाँ पे +2 स्टेट में है और यहाँ पे कॉपर 0 स्टेट। सिमिलरली आप यू कैन टॉक अबाउट मैग्नीशियम आल्सो, मैग्नीशियम यहाँ पे 0 में है और यहाँ पे +2। दैट मींस द चेंज इज ऑफ व्हाट, चेंज 2 का चेंज आ रहा है। +2 से 0 में भी इफ यू गो फ्रॉम +2 टू 0 दैट इज आल्सो 2 का चेंज, इफ यू गो फ्रॉम 0 टू +2 दैट इज आल्सो 2 का चेंज। तो दिस विल बी 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2। डज दिस मेक सेंस? आमना क्या, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पूछिए, फिर अगला सवाल फिर आप लोग करना है, ठीक है? Tell me guys, any doubt? Amna, Sufyan. So can you explain oxidation state change again? ठीक है, change in oxidation state में हमने इसको तोड़ा था। Like, Yeah. what is the oxidation state of copper 2 positive? No, keep your mic on. What is the Yeah. oxidation state of copper 2 positive? Aqueous. How much? Oh, 2. What? and Sufyan, आपकी आवाज आ, Sufyan, can you say ABCD? ABCD yes, can you A, B, C, D. EF G H I पूरा बोलिए एक बार। Yeah. या नहीं बोलो, अली पे नहीं सुनाने एग्जाम, ABCD सुनाओ। Hey. See, you are having disturbance at wherever you are studying, Sufyan. So constant, if you are not connected with me, then it will be a problem, ना Sufyan? Okay. गैप्स होते रहेंगे, ठीक है? थोड़ा try कीजिए, है ना, कि आप wherever you are studying, there is no distraction. कोई आपको ऐसे आवाज ना देता रहे बीच में, ठीक है? Okay. है ना? So you are not getting distracted by any other noises. Fine. I'm asking, what is the oxidation state of copper 2 positive? Oh, 2. O2. Answer दीजिएगा सिर्फ ना, no need of using any helping words. What is the oxidation state of copper 2 positive? 2. 2. What is the oxidation state of Mg? 0. ये आपको पता था? If you know it, why do you see it Okay. Mg या फिर no? Okay, I'm asking something यार. Did you know this already या फिर when I wrote 0 then you came to know अच्छा ये कुछ होता है 0. So what is the oxidation of what? Tell me, what is the oxidation state of aluminium 3 positive? इसका oxidation state क्या है? What is the oxidation state of, let us suppose, zinc? What is the oxidation state of zinc? 2. 0. ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। रिडॉक्स रिएक्शन जाइएगा if you have notes, ठीक है ना? तो वहां पे you will see if you have no charges means it is 0 है। तो कॉपर में यहाँ पे 2 पॉजिटिव है and यहाँ पे 0 है, so what is the change? How much is the change 2. from +2 to 0? Oh, that's all. Change it out. Okay. Got it? Understood. ठीक है, धीरे धीरे ना बस ऑक्सीडेशन ध्यान देते रहिएगा, हाउ आई एम द ऑक्सीडेशन स्टेट उसको आ जाएगा, ठीक है? फाइन। Yeah. बी पार्ट, बी क्वेश्चन, 2 aluminium plus 3 copper 2 positive gives 2 aluminium 3 positive plus 3 copper.
अभी ये वाला पार्ट लिख लीजिए, then you write the cell representation. In cell representation, you don't need to write the stoichiometric coefficient. ठीक है ना, 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्पेशी लिखेगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर, तो एल्यूमिनियम और कॉपर these are the reactions. Gives you aluminium 3 positive plus copper, aluminium 3 positive and copper, these are the products. ठीक है, हम लोग ये नोटेशन चेक करते हैं, A1 is done, A1 हो गया, are you guys done copying the A1? If you are not done copying, and run a sub, no, when you speak voice आपके बहुत मुफड़ लग गया, I'm giving you guys to send the answer. ना एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए, होपफुली रिप्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए. होगा No. नहीं होगा? Mm. हाँ, So how do I take the stoichiometric coefficient? और How do I take it? Wait, what do I take the value as? what नहीं रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन बताइए, रिप्रेजेंटेशन हो गया. It's the number before the element. And representation of representation of cell, right? The representation of cell.
Audible? So yeah, your mic is off by the way. Yeah. Details represent which code? Did Huh? you write the no? I can't hear you. You can't. Hear you. I believe. Please write in chat. Please write in chat what are you trying to say यार आवाज आपको समझ नहीं आ रही है तो please write in chat something. So plan properly. Okay. Can you hear me now? Yes. अब बताइए. Did you write the cell representation? Keep your mic on, Sufyan. Please keep your mic on. Yes, sir. Yes, sir. Did you write the cell representation? Yes, sir. Can you send it to me on WhatsApp? I want to see that cell representation. Okay. Yeah, very good. अब बताइए Sufyan. Please turn your mic on. You say yeah. Now where you are having problem? How to use the formula for stoichiometric coefficient? Stoichiometric coefficient तो वही मतलब what you have chosen. Did you choose aluminum or copper? What did you choose? I have to choose a particular element. हाँ, you have to choose a particular ion. एक ion को choose कर लीजिए पहले. Okay. Choose Aluminium. anyone ना. Aluminium. ठीक है तो aluminium में क्या है stoichiometric coefficient? Tell me. 2. बस आ गया ना. Yeah. 1 hour से. If you are you can अब दोनों से कर लीजिए. If you choose aluminium, it will be 2 into 3, that will be equal to 6. है ना? 2 is the stoichiometric coefficient. Delta OS is 0 से plus 3. That's the 3 का change. Number of electrons, if I am going to choose copper,
then the stoichiometric coefficient is how much? 3 into what is the change? It is +2 and यहाँ पे 0, so 2 का change. So the number of electron is still 6. That means you have to choose one और दोनों में से किसी एक को choose कर लेना, then now follow the method n into delta V, so आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है? ठीक है. Copy this down. Raise your hand once you're done.